जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हैं मेरे साथ सौरभ झा जी, जिनके ट्वीट्स तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उनको काफ़ी प्रमोट भी करते हैं, काफ़ी लाइक भी करते हैं और उनके अंदर कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन आज ज़रा उनके बारे में उनसे सुनते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन पे कब पहुंचेगी, उससे क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि यार, डॉलर लास्ट करेगा उस टाइम तक कि कहीं बीच में कुछ और गच्चा खड़ा हो जाएगा। तो नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट द टाइम। आई नो यू आर अ वेरी बिजी मैन, बट इट्स इंपॉर्टेंट आपके मुंह से हमको सुनना है कि क्या होने वाला है, कब 5 ट्रिलियन पे हम लोग पहुंचेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है, थैंक यू आदि फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। ऑलवेज ग्लैड टू बी हियर। तो चलिए पहले उसी के बारे में बात करते हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कब बनेगी भारत की। तो मेरे अनुसार ये जो कैलेंडर ईयर 2027 है ना, कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी टू दिसंबर 2027, उसके बीचों बीच किसी समय में तो बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, 5 ट्रिलियन, क्योंकि इस 2023 के कैलेंडर ईयर के एंड तक ये लगभग 4 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है, $4 ट्रिलियन के पास, जिसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा अगले 2-3 सालों में, वो 11 या 12% बिल्कुल होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 7% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा और जो मुद्रास्फीति की दर है वो 5% के पास रहेगी, मतलब इन्फ्लेशन रेट 5% के पास रहेगी। तो दोनों को अगर आप जोड़ दे तो आपको 12% मिल रहा है, और 6.5 भी हो सकता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो 11 से 12 के बीच में होगा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो आपको मिलता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को मुद्रास्फीति के साथ जोड़ के। जो आंकड़ा आपको मिलता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट। जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन को छू जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि उसका जो नॉमिनल जीडीपी है, भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है, वो वहां पहुंचेगी। तो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी इस समय है वो ऑलरेडी 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। मे बी 3.73, 3.78 ऐसा ट्रिलियन कुछ है। और अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 11 से 12% के बीच में हो अगले 2.5 वर्ष, मतलब 2 वर्ष, तो वो 2027 में किसी समय छू जाएगी 5 ट्रिलियन को। हाँ, मैं इसमें एक चीज मैंने, क्या कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एज्यूम किया है कि जो यूएस डॉलर इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 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 वो घट जाए, मतलब अगर रुपी कीमती हो जाए पहले से, तब ये 5 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ये और पहले आपको हासिल हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ इस बुनियाद पे कि ये एक ही जगह रहेगी, जो यूएसडी आईएनआर का जो रेट है। तो 2027 कभी किसी समय, कैलेंडर ईयर 2027 में आपको ये मिलेगा, आपको सुनने में आपको मिलेगा कि हम वहां पहुंच गए। मैंने अंग्रेजी में जैसे कहेंगे कि देयर इज ऑलमोस्ट एन अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी टू इट, राइट। ये नॉमिनल जीडीपी रेट है। नॉमिनल जीडीपी हमारा जो है डॉलर टर्म्स में, वो $5 ट्रिलियन हो जाएगा 2027 में, 2027 वर्ष में किसी समय। दैट इज इंटरेस्टिंग। और दूसरा, मेरे को जो इससे जो एक आफ्टर इफेक्ट होगा $5 ट्रिलियन से, कैसे आपको दिखता है? बिकॉज एक इसको कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियली तो कोई इसके ऊपर है नहीं चीज, बट काफी लोग बोलते हैं कि ये एक लाइन है इकोनॉमी के अंदर, जब आप इसको क्रॉस कर जाते हो उसके बाद उस कंट्री को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इज दैट ट्रू? देखिए, ये तो जैसे फिर अंग्रेजी में कहते हैं बहुत डिटर्मिनिस्टिक है कंट्री को, क्योंकि जापान भी आंकड़ा क्रॉस किया था एक समय, लेकिन इसी आंकड़े के आजू बाजू घूमता रहा है। हाँ, सो मैं उस पे ज्यादा गौर नहीं दूंगा कि, लेकिन ये बात सही है कि भारत जैसा देश जो अभी भी, जिसको कहते हैं कैपिटल पुअर है, जिसमें निवेश का जो टेक ऑफ होना है वो अभी
क्या हमारे देश में ये जो है ना कि इतनी ये क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, ये बेरोजगारी का इतना माहौल क्यों है, ये जो चर्चा चलती रहती है, इसका क्या इसका बेसिक ये क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 2011-12 से आज तक यहाँ पे जो निवेश का जो दर है वो एक निचले स्तर पे फंसा हुआ है। लेकिन लास्ट 6 से 9 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि शायद उसमें एक बढ़ोतरी आ रही, और अगर ये कायम रहे तब वो टेक ऑफ होगा जिसकी हम लोग बात करते हैं। और अगर 10 साल का एक निवेश का जो साइकिल है वो ऊपर की तरफ चला गया, निवेश का जो दर है वो ऊपर, निवेश लोग ज्यादा मतलब मैं निजी निवेश की बात कर रहा हूँ, सरकार तो निवेश कर ही रही है, माने सरकार खर्च तो कर ही रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इत्यादि इत्यादि, लेकिन उसका जो क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है उसको कहते हैं क्राउडिंग इन। एक होता है क्राउडिंग आउट, एक होता है क्राउडिंग इन। क्राउडिंग आउट का डेफिनेशन जनरली है कि सरकार खर्च कर रही है तो सरकार जाके मार्केट से ज्यादा ज्यादा पैसा उठा रही है खर्च करने के लिए, इससे दूसरों के पास कम पैसा हो जा रहा है खुद बोरो करने के लिए, ये होता है क्राउडिंग आउट। लेकिन एक क्राउडिंग इन भी होता है कि सरकार ऐसे ऐसे सेक्टर्स में खर्च करती है जिससे क्या होता है, उससे निजी निवेश भी आता है फिर, क्योंकि वो एनेबलर होता है फॉर अदर सेक्टर्स। मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो ऑब्वियसली सीमेंट और स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा, तो वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, तब वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, वहां पे निवेश, निजी निवेश आएगा उस डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि नया प्रोडक्शन सेटअप करना है, तो वो क्राउडिंग इन है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग इन का इफेक्ट हमेशा रहता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जा रहा है लास्ट 2 साल से। जो लास्ट जो बजट था उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी बढ़ा दिया गया था, मतलब ये, लेकिन उसमें जिसको कहते हैं काफी फ्रंट लोडिंग भी था, जैसे कि जो एक साल में आप खर्च करेंगे हो सकता है कि आप पहले 4 महीने में ही उसका ज्यादातर अंश खर्च कर दे, इसको कहते हैं फ्रंट लोडिंग। ठीक है, तो ऐसे सब है, उसका हम अभी शायद परिणाम देख रहे हैं। लेकिन अगर निजी निवेश का अगर दर बढ़ गया, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रेट अगर टेक ऑफ किया इंडिया में, तब वो टेक ऑफ होगा, तब हम 5 ट्रिलियन से बहुत जल्दी 20 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वही होता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप अगर आपका आपका जो सेंट्रल बैंक है, आपका जो केंद्रीय बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 4% मुद्रास्फीति को टारगेट करता है, उसका इन्फ्लेशन टारगेट है 4%, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को वो टारगेट करता है 4%। 4%, और अगर आप 7-8% पे रियल जीडीपी ग्रोथ हो, रियल जीडीपी मतलब है एक्चुअल प्रोडक्शन में जो ग्रोथ, अगर आप प्राइसेस को होल्ड करें, अगर कीमतों को एक जगह रखे और देखें कि अब कितना हुआ है उत्पादन का वैल्यू, तब आपको मिलेगा कि एक्चुअल उत्पादन कितना बढ़ा है। ठीक है, वो उसका दर अगर 7 से 8% हो, क्योंकि निजी निजी निवेश बढ़ना शुरू कर दे, तब तो आप सोच ही सकते हैं, अगर 1.12 के रेट से आप 15 साल ग्रो करें, और आपका डॉलर और ये मैं आपको बोल ही देता हूँ इसी समय, आपके दर्शकों को भी ये ध्यान लेना अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप अभी 5 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करें तब आप 27 ट्रिलियन रीच कर जाएंगे। सो 2042 तक, ठीक है, आप 27 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी रीच कर जाएंगे। वही, देयर विल बी एन अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी टू इट। अगर आप एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12% बढ़े फॉर नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आपका 7 से 8% होगा, और आपका इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% मान के चलिए। और अगर डॉलर और रुपी का रेट सेम रहा, तब आप वहां पहुंच जाएंगे बाय 2042। वो तो होगा, फिर वो टेक ऑफ होगा। लेकिन इसमें मेन चीज है कि आप वो, आपका जो ये रेट है, क्या कहते हैं, आपका जो ग्रोथ रेट है रियल जीडीपी का, उसको आपको 7% तक ले जाना है मिनिमम। हाँ, तो अब देखिए, एक देश के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, सप्लाई साइड से जब बात करते हैं, मतलब जो एक्चुअल सप्लाई है, एक तो डिमांड हो गया, डिमांड है कि जो खर्च हो रहा है देश में, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग जो खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन बेसिकली। ठीक है, अब एक चीज मैं बोल दूं, अगर मैंने और आपने एक गाड़ी खरीदी अपने निजी तौर पे, तब वो कंजम्पशन में जाएगा, लेकिन जी। अगर टाटा ने एक गाड़ी खरीदी तब वो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है,
क्योंकि वो एक फर्म है, वो एक कंपनी है, कंपनी अगर खरीदे तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, अगर गवर्नमेंट ने एक गाड़ी खरीदी हुई तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक में बोल रहा हूँ। और एक तरह से होता है सप्लाई साइड, जिसको कहते हैं सप्लाई साइड, है कि एक्चुअल सप्लाई, आपके आपके अर्थव्यवस्था की कितनी ताकत है चीजों को बनाने में, ठीक है, बहुत चीजों को और सर्विसेज को देने में भी, उसका भी एक पोटेंशियल होता है, उसका एक पोटेंशियल ग्रोथ रेट होता है। वो पोटेंशियल ग्रोथ रेट इंडिया की इकोनॉमी का 6% की तरफ चला गया था बिकॉज ऑफ शॉक्स और पैंडेमिक और ये वो। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और जो डेटा का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इससे अगर वो बढ़ गया हो, तब आप और इजीली वो 7% रीच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो 7% रीच करने की कोशिश किए जोर जबरदस्ती, मतलब और ज्यादा खर्च करके, तब आपके देश के में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। So basically, when you say potential growth rate, you mean the maximum rate at which an economy can grow without instability, chiefly in the form of inflation. ठीक है, ये होता है पोटेंशियल ग्रोथ रेट। तो इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ रेट अगर फिर से 7% की तरफ जा रहा है, तब वो सस्टेनेबल होगा, तो वहां हम लोग पहुंचेंगे। ये कुछ भी मतलब ये कोई भी चीज ये उतनी कोई ज्यादा दिलचस्प मामला नहीं है, बस सब चीजों को समन्वय रखना पड़ेगा, देश में समन्वय रखना पड़ेगा। आपका आपकी जो अर्थव्यवस्था की जो नीति होगी, आर्थिक नीतियां होंगी, उसमें उनमें समन्वय रखना पड़ेगा। अगर आप ये रख पाए तो आप वहां पहुंच जाएंगे मेरे अनुसार। इंटरेस्टिंग। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये जो अभी इकोनॉमिक टर्न्स हो रही हैं पूरी, आप दुनिया में देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें सडनली मूव कर रही हैं। एंड व्हाट आई हैव आल्सो नोटिस्ड इज दैट एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में लोग बात करते हैं कि देयर इज ए इम्पेंडिंग क्राइसिस। यूएसए का, दे हैविंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, उनकी डेट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यूरोप में हमको दिखता ही है कि देर इन वेरी बैड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ देयर, जर्मनी एंड दिस एंड दैट, काफ़ी हालत ख़राब है उनकी। हाउ डू यू थिंक दैट विल इम्पैक्ट हमारे पे, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? एंड जो डॉलर है उसके बाद उसको देखते हैं, बट आई वांट टू नो आपका यूएसए की जो इकोनॉमी, विच इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसके डाउनफॉल या उसके स्लो डाउन का क्या इम्पैक्ट रहेगा सर? ठीक है, उसका तो स्लो डाउन होना अनिवार्य है। ठीक है, वो ऑलरेडी दैट इकोनॉमी इज रनिंग हॉट। मैं अंग्रेजी में ये सेक्शन थोड़ा बता दूं। यूएस इकोनॉमी हैज बीन रनिंग हॉट since the pandemic, since the major fiscal and monetary stimulus was given, और उसके बाद मॉनिटरी टाइटनिंग करना पड़ा क्योंकि इन्फ्लेशन वहां की उत्पत्ति हो गई, जो पूरे 16 वर्ष में नहीं दिखा, 15 वर्ष से यूएसए में नहीं देखा गया था। ठीक है, पहले ग्रेट मॉडरेशन हुआ था और फिर तो जीरो लोअर बाउंड जिसको कहते हैं उसके तरफ इंटरेस्ट रेट गए थे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उनका उनका जो 2% टारगेट था उससे काफी कम चल रहा था। अभी वहां का जो केंद्रीय बैंक है, दैट इज द फेडरल रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका अभी एक एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट मॉडल है। उसका इन्फ्लेशन टारगेट हुआ करता था 2%, फॉर व्हाट दे कॉल कोड इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल के प्राइसेस नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, वो 2% का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, वो तो आपको एक्सीड कर गए। इसीलिए लेकिन उन्होंने एक एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट इंट्रोड्यूस किया है कि कभी कभी 2% से कम होगा, कभी कभी 2% से ज्यादा होगा उनके देश में इन्फ्लेशन का दर, मतलब मुद्रास्फीति। तो इसीलिए उसको वो क्या करेंगे, अब वो अपना जो मॉनिटरी टाइटनिंग है उसको घटाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक मैनेज किए हैं। लेकिन अगर और कुछ दिन चलता रहा इंटरेस्ट रेट्स एट द लेवल एट विच दे आर, तब द यूएस इकोनॉमी देन द यूएस इकोनॉमी विल डेफिनेटली हेड इनटू रिसेशनरी टेरिटरी। अब जब वो रिसेशनरी टेरिटरी में जाएंगे, तब उनको ऑब्वियसली अपना ब्याज दर घटाना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक को, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका को। जैसे ही वो घटाएंगे, डॉलर में थोड़ा वीकनेस आएगा, रूपी अप्रिशिएट करेगा, युआन भी अप्रिशिएट करेगा। अभी तो युआन काफी डॉलर से ये डेप्रिशिएट कर चुका है ना। वो जो एक 7 का साइकोलॉजिकल लेवल है, $1 इक्वल टू 7 युआन, वो क्रॉस कर चुका है काफी पहले। और लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन कहीं लेकिन दिखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई डी डॉलराइजेशन नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा आपको।
युआन, चाइनीज युआन या आरएमबी, टोटल एलोकेटेड ग्लोबल सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में उसका शेयर था 2022 के क्वार्टर 2 के एंड में 2.77, ठीक है, 2.77%। आज की क्वार्टर 2 2023 के एंड में वो है 2.45%, कम हो ठीक गया। है, कम हो गया है इन एलोकेटेड रिजर्व्स, ओह, एलोकेटेड सेंट्रल रिजर्व में। और यही मेन, जब आप कहते हैं ना आरएमबी इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन का यही मेन स्वरूप होता है। अगर आपका करेंसी फाइनेंस में युआन का यूज बढ़ गया, या ट्रेड फाइनेंस मतलब ट्रेड फाइनेंस मार्केट में बढ़ गया, या पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट में बढ़ा, दैट्स ओके, दैट्स नॉट रियली एन you know a real what do you call indicator of internationalization. If those things keep increasing, then yes, over time the RMB share in international in reserves will also increase, and I can describe the mechanism. But right now, they are actually showing a declining share in allocated reserves at the IMF, as collated by the IMF COFER, COFER. Now, what has happened to the USD, United States dollar इसी समय quarter 2 2022 में the United States dollar share in allocated global reserves, I mean reserves held by other central banks, was 59.74%. Today it is 50, at the end of quarter 2 2023, it is 58.88%. So the USD has also lost some of its share, right? Percentage wise, a lesser share, I guess, than the yuan has, because 0.35 of 2.77 is higher in terms of percentage wise. But the thing is, minute the ones difference. who it's actually the euro and the yen which make up for that small fall in the dollar share. So people still prefer to hold euro and yen in central bank reserves than the RMB. The RMB has not gained at the cost of the dollar, and the dollar is still pretty much supreme. And by the way, these figures are masking something. In the course of 2022 and early 2023, the dollar share had fallen further, but now it is rising back up. Rising back up again. Because as more and more news is coming out of China about the state of affairs, see their debt to GDP ratio, China ka overall debt to GDP ratio is close to 300%. ठीक है? Their local government financial vehicle debt is now 100%, and that is completely non-transparent, that debt. किसी को ये भी पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उस डेट को बैक करने के लिए तैयार है चाइना में, ठीक है। चाइना से कैपिटल आउटफ्लोज उसी तरह हो रहे हैं जैसे 2015-16 में हुए थे, इतना ज्यादा हो रहे हैं कि पीबीओसी मतलब चाइना का जो केंद्रीय बैंक है और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो युआन लिक्विडिटी ऑफशोर मार्केट्स में लिमिट करना चाहते हैं। 2 साल पहले एक बॉन्ड कनेक्ट स्कीम उन्होंने ले आया था, ऑफशोर बॉन्ड मार्केट्स में युआन डिनोमिनेटेड एसेट्स के सेल को बढ़ाने के, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। वहां से वो युआन ले रहे हैं, उनको इतना डर है कि उनका जो करेंसी है वो डॉलर के बराबर और वीक हो जाएगा, कि वो युआन जो जहां जहां युआन के पूल से विश्व भर में उसको घटा रहे हैं, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू लिमिट युआन लिक्विडिटी इन लंदन, इन न्यूयॉर्क, इन हांगकांग, इन एवरीवेयर दे कैन। अच्छा, उन्होंने कैपिटल कंट्रोल्स लागू करते रहते हैं। कभी कभी कुछ खबरें आती है कि कुछ इन्वेस्टर के लिए वो इजी कर देंगे पैसा निकालना, बट एक्चुअली वो कैपिटल कंट्रोल्स को और मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए वो बिल्कुल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के भी खिलाफ है, क्योंकि वो भी एक जरिया बन सकता है देश से कैपिटल आउटफ्लोज के लिए चाइना से। So China जो है ना, China is not behaving like a competitor to the United States in the on the geoeconomics front. It's behaving like a typical emerging economy, which is trying to protect its currency and keeping capital controls, in place. Because क्या होता है, लोग बोलते हैं मेरा करेंसी अगर वीक हो गया डॉलर के हिसाब से तो मेरे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे ना। नहीं, वैसे नहीं होता है, वो कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो वो इन एनी केस एक लैग प्रोसेस है, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट्स भी है ना वो भी डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो वो तभी होगा जब आपका इंटरनल कॉस्ट एडजस्टमेंट होगा, उससे तभी आपको उसका गेन मिलेगा। दूसरी बात है, जब आपका करेंसी डेप्रिशिएट करता है vis-a-vis द डॉलर, हर उत्पादक को, मतलब वो जो भी निर्यात करता है, हर आदमी जो निर्यात के बाजार में है,
उसको एक्सपोर्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है डॉलर्स में, क्योंकि उसे तो इमीडिएटली पेमेंट नहीं मिलेगा ना, उसे ये दिखाना पड़ेगा। सो क्रेडिट। वो उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है सोर्स करना। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो है किसी भी देश में, कि स्पेशली जो भी इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज जिसको कहते हैं, जो अभी विकासशील देश है, जो भी विकसित नहीं हुए हैं, वहां के जो फर्म्स, जो कंपनियां होती हैं, वो डॉलर में काफी बोरोइंग करते हैं, लेकिन उनका जो वो जिसमें उनकी आमदनी होती है वो उस देश के अपने करेंसी में होती है, और वो उनका जो बोरोइंग का जो टर्म्स होता है, दे टिपिकली बोरो शॉर्ट एंड दे स्पेंड लॉन्ग। तो उनका एक करेंसी मिसमैच है, इसको ओरिजिनल सिन भी कहते हैं इन द पार्लेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, the moment the currency depreciates, it will lead to a tightening of credit conditions for them. और उनका अगर बोरोइंग का कंडीशन टाइटन हो जाए तो वो भी कम निवेश करेंगे, तो वो अगर निवेश करेंगे तो डिमांड घट जाएगा इकोनॉमी में, तो आउटपुट पे उस पर असर आएगा, उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे असर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा ऑन। सो इसलिए क्या है ना, इसलिए चाइना इतना डेस्परेट है कि वो अपने युआन को ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं करने दे, क्योंकि युआन जितना डेप्रिशिएट करेगा उतना कैपिटल आउटफ्लो होगा। अगर मैंने डॉलर में बोरो किया है और जाके युआन में इन्वेस्ट किया है, और युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, तब तो मुझे घाटा हो रहा है ना, क्योंकि मुझे तो वापस इसको डॉलर में ही लाना है। अब मैंने जो भी निवेश किया है मुझे कम डॉलर मिलेंगे उसके लिए, जब मैं उसको चाइना से निकाल के लाऊं। और वैसे भी चाइना से पैसे निकालना है उतना आसान नहीं है जितना एक बिल्कुल इंस्टीट्यूशन। आसान नहीं है। तो कौन फिर ऐसे करेंसी में घुसेगा जहां से चीजें निकालना आसान नहीं है, और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहे हैं। और बिकॉज चाइना का डेट लेवल इतना हाई है, उसको इट इज हैविंग टू engage in monetary, in loose monetary policies when या America या has tightened, right? So its currency is bound to depreciate. There's going to always be selling pressure on the yuan. So it's caught in a bind. It has to hold on to dollars itself. जैसे एक आंकड़ा है कि चाइना का एक्चुअल जो डॉलर होल्डिंग्स है ना, इट्स ग्रेटर देन द थ्री, it's more than what it seems on paper, more than the PBOC's holdings, because there are a lot of reserves with their development banks and their other state-owned entities and all that. उसके ऊपर से let's not forget one thing. Today, the Belt and Road Initiative is the largest single collection of unviable projects anywhere in the world. Okay, and the creditor for that is one single country. And most of the loans for BRI loans, Belt and Road Initiative loans, have been made in dollars. Okay, most of those loans have been made in dollars, not in yuan. Right. So the bottom line is that China is not a replacement for America. The eurozone has already failed to be a replacement for America. आपको जब किसी करेंसी हम डी डॉलराइज करेंगे, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। टीना फैक्टर है अभी, टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। आज कोई भी दूसरा करेंसी ना डॉलर के मुकाबले स्टेबल है, ना उसका जो अंदरूनी जो उसकी जो अंदरूनी जो बाजार है, दैट इज एज वो उतना लिक्विड और डीप है। किसी भी बाजार की जो क्षमता होती है ना, वो इससे मेजर किया जाता है कि वो कितना लिक्विड और डीप होता है, हाउ लिक्विड एंड डीप इट इज। लिक्विड का मतलब है दैट यू कैन बाय एंड सेल थिंग्स वेरी इजीली ओवर देयर, देयर इज ऑलवेज अ बायर, देयर इज ऑलवेज अ सेलर। Depth means that your buying and selling does not change prices in the market. The buying and selling of even a single group of individuals does not change prices that appreciably. There is only one currency market in the world that meets this criteria, and that is the USD market. Both the onshore and offshore. The problem is nobody likes this situation. किसी को पसंद नहीं है ये, अगर सब बोले कि भाई but that's the reality of it. India will like this situation provided America does not move away from opening its markets to us. The day America does that, India will also not be in that camp anymore. Okay, it will be as simple as that. Even today, America is the largest single consumer market in the world. See, this is what I wrote in my book last year, so I'll just read it out because it sort of sums up what we are discussing.
I wanted to read Guys, this. इनकी हाँ, बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. For those of you who want to buy this, please do that. let It's a fantastic read. let me read the last. This is the last paragraph of the first chapter. Though it may no longer be seen as a primary engine of global growth, the fact is America continues to possess the world's single largest consumer market in nominal terms and thereby a major opportunity for exporters around the globe. If inflation once again settles down as the Fed expects it to, post the liftoff, that is the rise in interest rates, and America's financial markets remain open in terms of capital flows, it is unlikely that the dollar will be dethroned as the world's main reserve currency in the medium term, especially given that its rivals such as the euro or the yuan simply cannot compete for the foreseeable future, as we shall find out subsequently. And despite the hype, digital currencies lacking a sovereign backer cannot oust the dollar either. Thus, the US, owing to its market size and global status, will be able to service its growing debt without private foreign investors losing confidence and exorbitant privilege, as it were. And this is something a country like Greece does not have, as we shall examine next. So, a country that I went into, a country like Greece did not even borrow in its own currency. Its currency, the euro, is controlled by a central bank elsewhere, by the European Central Hmm. Bank. Its own the Bank of Greece has no control on it, right? It is just, it has quotas for issuance and things like that. So this is what I'm talking about. The United States has exorbitant privilege even today, and it has the technology even now. Let us not forget that. Okay, in Yeah. terms of semiconductors and jet engines, it is still the world leader by far. So it's not just the petrodollar; it's the techno dollar. Tech. America, Exactly. okay, it's the techno dollar is very much in vogue. It's very much in play. हम लोग जो आज देख रहे हैं कि आज के तारीख में भी मार्किन युक्त राष्ट्र टेक्नोलॉजीज में आगे है दूसरों से. ये एक फैक्ट है. दिस इज ये एक सच है, और ये सच जितना भी कड़वा लगे यही हकीकत है. अब मामला ये है कि फिर क्या किया जाए. हमारे देश की क्या रणनीति होनी चाहिए. हमारे देश की यही रणनीति है. हमें तो चीनियों के मार्केट में ना एक्सेस दिया गया, जिन चीजों के लिए हमें एक्सेस चाहिए था, हमारे फार्मा के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, दवाइयों के लिए, हमारे आईटी के लिए उन्होंने कभी दिया नहीं. तो हम लोग ने आरसेप नहीं ज्वाइन किया. आरसेप नहीं ज्वाइन करने के बाद वो हमारे सीमा पे चढ़ाई करने आ गए, जिसके जिसके साथ हम आज भी जूझ रहे हैं. ठीक है. अमेरिका के साथ हमारा क्या है ना, ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है. अमेरिका हमेशा ही एक नेट कंज्यूमर होगा ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एज फार एज गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इज कंसर्न. और जैसे जैसे चीन 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 की जो अर्थव्यवस्था है वो तो कमजोर है ही, और उनका जो ह्यूज जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो एस्टेट बनाया है, अब वो धीरे धीरे उस लेवल पे मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया है. एक तो वहां पे कीमतें बढ़ गई है, लेबर का प्राइस बढ़ गया है, चीजों की प्राइस बढ़ गई है, वहां से सप्लाई डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हुए हैं पैंडेमिक में. उसके ऊपर ये भी परेशानी है कि उनका एनवायरमेंट और नहीं ले सकता है इतना उत्पादन, इसीलिए उन्हें उत्पादन घटाना ही पड़ेगा. अब वो उत्पादन वियतनाम, मेक्सिको तो जा सकता है, लेकिन वो स्केल पे नहीं जा सकता है जो भारत में आ सकता है. There was that very interesting article, right, about the Apple iPhone factory in Tamil Nadu, Yeah. Sungavapuram. So it had a lot of human interest stories and this that, but the key thing at the end was that the defect rate in the Much factory lesser. there has already managed to reach that attained in China over a much longer period of time. And in ages, this is in 6 months. Okay, so this goes to what I had said in an earlier program of yours. Look, manufacturing excellence built over time. I totally agree. I don't deny it. You have to put in R&D, but it is easier to attain manufacturing excellence than it is to attain services. Great competitiveness in high-end services. Otherwise, Exactly. all the outsourcing would have been happening to China. Look at China's services trade. China services export, they're flat as ever, right? So once China is now going to face a very bad situation where it's aging, its domestic economy cannot sustain its very large industrial estate, and it is going to become competitive compared to other areas. So it's going to be saddled with debt for years and years.
ठीक है, चाइना ये डेट का जो माहौल है, ये जो ऋण ऋण शोध करते करते ही चाइना के काफी जनरेशन बीत जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वो जापान जैसा हाल होगा, जिसको व्हाट वी कॉल द जापानिफिकेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, व्हिच आई बीन टॉकिंग अबाउट, किताब में भी काफी लिखा हुआ है। तो ये है हाल। तो फिर वापस हम लोग आ रहे हैं, भारतवर्ष को क्या करना चाहिए। भारतवर्ष का ऑब्वियसली, जैसे चाइना हैज टू रीबैलेंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, इंडिया हैज टू रीबैलेंस समवॉट फ्रॉम सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे लिबरलाइजेशन के दौर में बस यही बात चली कि हम तो बिल्कुल सीधे सीधे सर्विसेज, एग्रीकल्चर से सर्विसेज में चले गए, हमें औद्योगिकरण करने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात थी, औद्योगिकरण करने की हमें बिल्कुल जरूरत है। और अब औद्योगिकरण शायद होगा, औद्योगिकरण होगा और उसके साथ वो, उसको करने के लिए वो निजी निवेश भी बढ़ेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। हालांकि जी। उतना नहीं बढ़ेगा जितना 1990 में औद्योगिकरण करने से बढ़ता है, क्योंकि आज के जमाने में फैक्ट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर ऑटोमेटेड, ठीक है, उतने उतने लेबर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो एक पुश देगा, क्योंकि एक चीज जानिए कि एक एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का की नौकरी 7 और सर्विसेज सेक्टर की नौकरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सर्विसेज भी बढ़ते हैं अगर आप औद्योगिकरण करें तो। हाँ, बिकॉज आप लेकिन यूर एन हमें ओपन कंट्री, यूर एन ओपन कंट्री अनलाइक चाइना। हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन चाइना में उतना ये फिर भी जो भी उनका सर्विसेज हुआ इसी पुश से हुआ है, बिकॉज जी। अदरवाइज some of the services sectors, although larger than us in size, obviously, because it's much bigger economy, they're not very competitive or anything, are not the way they should be. Even in terms of maybe employment intensity, they're not where they should be. So anyway, लास्ट में so मैं yeah, go एक ahead. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे विद रिगार्ड्स टू द प्रिंटिंग। काफी Hmm. लोग बोलते हैं ओवर प्रिंटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। व्हाट इज द गेम विद प्रिंटिंग? सो लेट्स टेक 2 minutes विद दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ये आफ्टर दैट। ये ये एक्चुअली बहुत ही लंबी चर्चा हो जाएगी। ये प्रिंटिंग को लूजली बात करते हैं। प्रिंटिंग का बेसिकली मतलब है, देखिए, किसी भी बैंक का एक एसेट लायबिलिटी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। एक केंद्रीय बैंक का भी होता है। केंद्रीय बैंक के एसेट साइड पे होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड। और उसका जी। जो लायबिलिटी है, आपके देश का जो लीगल टेंडर है, जो करेंसी है वो, और जो भी रिजर्व्स है प्राइवेट बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स होते हैं, वो उसका लायबिलिटी होता है। प्रिंटिंग मनी का मतलब है हम कमर्शियल बैंक्स का रिजर्व सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, ज्यादा उनके थ्रू से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के और दूसरे एसेट्स खरीद के, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो रियल इकोनॉमी है, जो एक्चुअल खरीद फरोख्त का इकोनॉमी है, गुड्स एंड सर्विसेज का, वहां पे ये पैसा पहुंच जा रहा है डायरेक्टली, वैसा नहीं पहुंचता है। उसका एक दूसरा मैकेनिज्म होगा। अगर वो बैंक अपना लोन बढ़ाना शुरू करे, लोन लोन ज्यादा देना शुरू करे, तब पहुंचेगा पैसा बाहर, उसके पहले नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो कमर्शियल बैंक्स के ही एसेट साइड पे रहेगा। ये हम आपके दर्शक नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से, ये चार्ट वार्ट बार बार देके मुझे समझाना पड़ेगा। लेकिन दिस इज व्हाट दे मीन बाय प्रिंटिंग मनी or adopting inflationary policies in one times parlance. Then there are many things, whether it will be really inflationary or not, okay, how inflationary it will be, these are all open questions, by the way. That depends on the state of the economy, overall state of the economy. फैंटास्टिक। तो मतलब वो जो फ्री प्रिंटिंग बोलते हैं ना, तो अमेरिका फ्री प्रिंटिंग करता है, वुड यू अग्री विद दैट सर? They have more leeway to print, if I may use the word, although I don't like it, than others do. They have more leeway. फैंटास्टिक। लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस गाइस। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा। आई नो दिस इज अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक, स्पेशली भारत के अंदर, क्योंकि काफी नैरेटिव्स इधर उधर उड़ते रहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी के हिसाब में हमको थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, बिकॉज इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड टुडे। जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, वी हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। उसके बाद बाकी कुछ देखिए जो करना है आपको। यू हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कमिंग शॉक्स और व्हाटएवर इज गोना हैपन इन द फ्यूचर। That's the most important thing. And like the video, guys. Subscribe to the channel अगर आपने नहीं करा है. Spread the word about Dev Talks. Most importantly, I will get Saurav Saab back again for the discussion on the printing in sometime in probably in the next month or something. We will talk about overprinting or underprinting or no printing or printing.
And you can contribute towards the dev talks efforts with the QR code up there, या फिर आप PayPal use कर सकते हैं for those of you staying abroad, या फिर आप super stickers और super chats भेज सकते हैं. Let's get into the first one. Atul ji, he says, any reform in future for digital transactions? Thank you so much. Yeah. So I think the what do you call that? The emphasis will have to be on terms of cybersecurity, making digital transactions more secure. Right. There can be other reforms. You can tweak the kind of, you know, tariffs you charge, or there can be other things. Basically, the loads that you put on transactions, which is maybe taken away by the government, etc. And as far as the regulation of cryptocurrency is concerned, that has to be very strict, very hard. The only things that should be entertained are what are called stable coins, okay, which are benchmarked to some existing legal tender currency. Those are the ones that can still be entertained, and I think the market will move in that direction, especially when our own central bank digital currency comes. Okay, I'll like to explain something here. When you see the numbers in your bank account, you have so many 10 lakh rupees in your bank account. Does it actually mean you have 10 lakh rupees in your bank account? Yes, in your bank account you do, but you don't actually have to. That's the liability of the private bank. That's a ledger balance. Okay, if the bank goes under, that might go under. But when you have a 100,000 rupee note in your hand, that is guaranteed by the central bank of your country, right? By the Reserve Bank of India, by the consolidated government. Why do you even hold any money? Why do you hold rupees at all if you're a citizen of India? Because you have to pay your taxes in rupees. Remember that, right? That is one of the main reasons why you hold the rupee. Now the thing is that now what happens is when you have a central bank digital currency, then when you are exchanging that, you're not exchanging a ledger balance between two banks just like that. You are exchanging the liability of the Reserve Bank of India. So it is equal to your legal tender note. Okay. So that in a sense will be the benchmark against which all these digital assets will be then benchmarked against that, because that will be the risk-free digital currency, risk-free digital asset. So that is definitely going to be a game changer, the CBDC. But as far as digital assets classes are concerned, I see stable coins as the way forward. But I have very conservative views on this, I would say to your viewers. There might be others who may be hopping mad because they think anarcho-capitalism is the way forward or something. But I'm completely against any form of anarchy. Right. So I am a firm believer in stability. That's the whole thing, guys. We must understand economics and all these things are debates, right? So as a matter of fact, I must appreciate Saurav ji, who's come out and said I have this point of view, which is very important for us to understand, because nobody knows what's exactly going to happen in the future, but you're trying to analyze a situation with the available data in front of you. And CBDC, people have very strong this thing. Everybody says CBDC will be a deep state controlled currency which will switch you off whenever whenever you want to, and Listen, that's the I generally don't tread in the conspiracy realm either, as in generally, as in almost never, or never rather. But I can say one thing, that historically it has been seen that if you have a Pax Americana, okay, then your currency is more likely to be accepted by those under that Pax, right? So this can explain. So makes what sense. China tried to do was it tried to regionalize its currency first, the RMB. So it tried to create, instead of an RMB global, it tried to create an RMB regional, right? And it thought it had all the tools in place to do that. And RCEP was going to be the huge next year level enabler. Because you see, if a bunch of countries have a lot of economic relations with each other, it will start making sense to trade in their own currencies. Okay, because you will always it'll be easy to find a counterparty, right? And if it becomes easy to find a counterparty, then what happens is, if more and more people start trading in the say the yuan between China, Vietnam, China, Thailand, etc., and all that, then the central banks of those countries will like to stabilize their currency vis-a-vis the yuan. So then they'll start holding yuan reserves. Okay.
And the more That's not you going to happen. and the more yuan reserves they hold, their currency, and which means they will stabilize their currency against the yuan, then their currencies will co-move with the yuan much more. The more co-movement with the yuan happens, the less will be the currency risk for for a private individual, and more trade in the yuan will happen, and then the central banks of those countries will be even more incentivized to hold more yuan in reserves. Okay, True. this is called portfolio bias. It's called a key currency area. So China with RCEP tried to create a key currency area in that, and it's also trying to give a military overlay to it by doing the 10 dash line and all that, right? But it has not been easy even then. And the main reason for that has been, even when Thai businesses and all have accepted yuan, they found that they may be able to buy things from China using yuan, but they're not able to invest very easily in yuan denominated assets. There's just not enough there's no liquid market for it, which is why even this has not gone on at the rate that China wanted. Most of the yuan support has come from the Bank of Russia actually since the war in Ukraine. Ah. Yeah. So that sort of thing is there. So, and America is not going to, the way America has started building up bases in the northern Filipino islands, you can understand that they are not going to let this Pax Sinica happen with the 10 dash line either, right? So Anything but the Pax Sinica. I mean, if one last thing I'd like to say on this. In 1894, the Russians and the French entered into an alliance, and as a result of that, the Russians started holding a lot more francs in their reserves. Okay, this is the sort of thing that we saw in 2022 also between Russia and China, but doesn't mean that this is durable either. The day Russia is rehabilitated and brought back into SWIFT and things like that, you'll see a different picture altogether. which is by the way going to happen very soon because he's already Yeah. asking for it. The first thing he's talking about opening, वो जो बोल रहा है कि भाई मैं तुमको ग्रेन बेचता हूँ, मेरे से फर्टिलाइजर चाहिए तुमको, ठीक है ले लो, मैं ग्रेन भी बेचता हूँ तुमको, मेरे को स्विफ्ट के साथ कनेक्शन करो. There you go. So CIPS is not an alternative to SIP. So even the messaging system, although in place, is not really an alternative. So that's why the dollar will, endure. Mm. Atul ji, thank you so much. I think this is a repeat question. SR, thank you so much. If sir, China exchange rate 7.13 GDP and GDP 17.7 trillion. Disagree right there. India exchange rate 83.3, GDP 4 trillion. Why can't we decrease the rate of exchange if reducing it increases the GDP faster? No, see, if you reduce the exchange rate, then in nominal terms, all other things remaining constant. When if you let the rupee become cheaper, then your nominal GDP in dollar terms will become smaller anyway. Now, Correct. by devaluing, all those people like Ashoka Modi and all saying the only future is to devalue the rupee. They don't understand the trade channel of the exchange rate. Okay, there is the finance channel of the exchange rate. They only think in terms of the trade channel. The trade channel is basically I'll make my currency cheaper and I'll export more. That's not how it works, as I explained to you. First of all, most of your exports are denominated in the dollar, so you will not get any immediate benefit anyway. Second thing is your export finance will become dearer, and the worst part is that liquidity in your country will dry up because your firms are also borrowing in the dollar. They're not only borrowing domestically, they're borrowing from offshore markets also. So the thing is Correct. that the net result may not be in your favor. This is exactly why China is not doesn't want the yuan to depreciate. And also don't forget one thing: given the weakness in the American and European and world markets, simply by devaluing your currency, you will not gain a share over there, and it may lead to competitive devaluations by other countries also. Na? They Other are not going to countries. sit still. Yeah. So what currency war will not solve your problems. Your problems will be solved by the right kind of investment into R&D, investment into upskilling, ease of business, okay, and making sure that policies are stable. This will give you the edge. See, already there is talk that because of the infrastructure investments in the recent past, from 13 to 14% share in GDP, right? The cost of logistics has come down to maybe 8-9%. 8%. Huh? Below, not 8%, maybe 9 to 10%. Okay, I'll take the higher end of the distribution.
Yeah, right? it's saying So 8.3% onwards is what it yeah, yeah. says. So what? So that point is that that is where you need to focus. There is a lot of latent productivity in India that can be tapped for the future of growth. Productivity increments are the best way to beat inflation and make your products more Absolutely. competitive. And not to mention that you also have to work on the products themselves. What somebody buys when his income is 20,000 rupees is not what he may want to buy when his income is 1 lakh rupees per month, right? A whole bunch of That- people will say, I won't buy a Samsung phone, I'll buy an Apple iPhone now. So that is how. So you need to, when you say import substitution, you need to do innovation-based import substitution. You need to invest in R&D. You need to invest in upskilling. You need to bring new products to the market. You need to make things cheaper. Okay, you need to bring things that are cheaper. There are two ways in which you can do it. You can improve the quality of your products, or you can invent new things which substitute for old things, right? And of Hmm. course, you need to attain scale. If you, what you need is manufacturing scale. What China had all Scale. these years was scale. Yeah, yeah, yeah. Most products enjoy increasing returns to scale. They enjoy economies of scale, the production of most things. Okay. In India, you're doing subscale production in so many areas, which is why this PLI scheme is actually the right decision. But it has to go down to the product level. It should have gone to the component level, as I have been shouting about for 5 years now. I actually had wanted a scheme like this in 2018, and wanted it pushed and wanted it focused at components. Because today, if you look at cell phones being made in India, value addition is maybe 15%, some cases 20%, some cases less than 15%. In China, it is 40-45%. We need to You know, get now there. they've changed the law. Now, they've changed the law with regards to make in India. You it the percentage needs to be with regards to the component itself and the elements itself, Yeah, yeah, not not to and do with any additional yeah, yeah. this thing. When you say value added, you're taking into account the labor value added also. Okay, you're taking into. I'll give you another example. When we say the Scorpion class, somebody is built in India as the Kalvari class. We did. We reached with the last submarines. We reached a value addition of 35 or 40%. Okay, but actually the value addition in terms of things being put in is much lower because you're taking into account the value added of labor over there as well. True, true. Get the picture? Of course, value added labor counts because that is the value that goes to labor anyway. So, I mean, provided you pay labor according to their marginal product, which is what China has not done for years and years, which is another reason why their domestic demand situation is what it is. Their labor has True. been far more productive than what it has been paid, right? So that is the mismatch. True. Anyway, okay. Last question, I think. Yeah. Yeah, two more. We'll take one this, and there's another one that I want to ask you, and we'll just finish that. U.S. debt situation and its impact in upcoming 10 to 20 years. Well, US debt situation is such that they have the greatest ability to print money, as somebody was saying. See, if you have your own currency and that currency happens to be the US dollar, you allow it to fluctuate. You don't try to hold it at a particular level or in a trading band, or you peg it or anything of that sort. And you have a central bank which, one way or the other, while claiming independence, ends up helping your fiscal sustainability. Then there's really nothing you need to worry about, especially if you have a currency which is not, which others are also using for borrowing and extending loans. Okay, so the bottom line is that, I know, see, if you take away, if you assess US debt in a particular way, or what we call unfunded liabilities, then the United States may have a problem. But that is not how, the way you're accounting for debts right now. It is for the next 10-20 years. I don't see them getting into a situation of debt default unless their own domestic civil war does not allow them to raise the debt ceiling in time. Yeah, Okay, yeah. and understand one thing: the public debt, US government debt, is allowing the private sector in America to deleverage. People have to understand the difference between public debt and private debt. Financial crises happen when private debt becomes unmanageable. Okay, that is when, of course, financial crisis can happen in a country which has a lot of its public debt denominated in the dollar also. But if it is Mm, denominated mostly in its own currency,
then the then the public debt is actually almost like a public good. It will allow the private sector to deleverage, right? And that is what is happening in the case of the United States, which is borrowing in its own currency, and others are also borrowing in that currency. So, There is a United problem there. United States has more degrees of freedom than others. Okay, and now they're going to enter a monetary easing cycle. So, as you know, as far as you know, just the bare bones, although there are other issues at hand, bare bones debt dynamics is concerned, it is driven by an equation where the primary balance of the government, okay, the primary balance, you can call it deficit if you put a negative sign, is equal to R minus G into the debt levels by GDP. Now, R here is the what is called the implicit interest rate of the overall debt, public debt of that country, not public debt of that country. G is the growth rate of nominal GDP. If R minus G turns positive, then you cannot afford to run large deficits. Let's put it that way, okay? Because then your debt dynamics may explode. But R minus G, R minus G will not turn positive for America. It will be close to each other because they will bring that down to a point where the what is called where the American economy just meets its potential growth rate. This is all monetary economics. I won't go into details here. I'll spend an hour trying to explain what this is. Okay, there Lastly, are others. Uh, let me just yeah. ask you about the rupee, right? So there are three separate comments, and they're relating to the same thing, which actually flows into a question. So your comment on that. Niruji starts and she says, Adi, when countries will start trading in their own currencies and not use USD, then automatically the USD will lose value gradually. Therefore, it can be named as de-dollarization. Point one. Second point is, since petrodollar, USA would be aggressively reacting against countries trading in bilateral currencies. However, recently many countries are entering into non-dollar agreements. USA is not reacting. Why? Third comment in the same line is, so Bharat signing bilateral deals with targeting partners in rupees. So we are following same Pax Bharat strategy. What would you kind of? Okay. Now, when you talk about internationalizing a currency, what are the three things you mean? Okay. It means that your currency is used at a global level first as a medium of exchange to settle payments. Ji. Second, as a unit of account, petrodollar. That key commodities are denominated in that priced in that particular currency. See, why does petrodollar help the dollar? Because if things are priced in the dollar, then central banks would like to hold dollar reserves, right? Because then they'll want to eliminate currency risk. Everybody who's in the dollar trading business will want to, in the petro trading business, will want to hold dollars because that is what they'll Correct. need to buy the oil, right? Hmm. Because they won't want a larger element of currency risk coming in, so on and so forth. Anyway, that is also one layer of demand for the dollar. So medium of exchange, unit of account, which is petrodollar, whatever, and Hmm. but the most important, store of value. Okay, even today, the main store of value is the dollar. The fact of the matter is, since the pandemic, the rupee and the yuan have both declined vis-a-vis the dollar. Okay, and there was a time when the euro reached parity with the dollar almost. Yeah. Okay, so the bottom line is that the dollar is still seen as the greatest store of value. And when I mean the dollar, I mean the US economy. Fact of the matter is, today, whether it be somebody wanting to acquire some technology or buy a house, they will likely run to California. Tons of Chinese want to buy houses in California. How many Americans want to buy houses in Shanghai today? There was a time when some of them may have wanted to buy, but now probably nobody really wants to buy anymore. Okay, not to mention that you can't just buy a house like that. You'll have to lease stuff and all that. So that's what I'm saying. Liquid and deep markets. America has liquid and deep markets for everything. It has a liquid and deep market for technology also. If you go to the Bay Area, because it's subject to the Pentagon, the US, State Department's controls, ITAR, this, that, and Bureau of Commerce's, US Department of Commerce's controls also. But the fact is, America has liquid and deep markets for just about everything. Nobody has matched that yet, and especially for its currency. Nobody will want to put their money now.
Now, this is the baby step, okay, where we start trying to settle things in our bilateral currencies. But what are you going to reference how are you going to achieve the exchange rate over there? When Parity, same trading is so thing. small, Yeah, you will have to benchmark it against some other currency, and it's most likely the dollar only, which is why rupee ruble trade has not taken off like that, right? And not to mention that till you open your own capital account, you will never reach that benchmark, that you ruble to rupee benchmark. Okay, you will still, it will be reference against either the dollar or the yuan or something else, or the euro perhaps. So getting a reference rate is not so simple. So these are just baby steps. America has nothing to be worried about. Only when I explained that process earlier on, when trade settlements and investment will lead to the many more dollar reserves being held. That is the third stage, store of value being achieved yeah, with something else. Okay, that's the rupee will replace any other currency only when it reaches that third stage. We are right now only in the first stage. Right now we are taking the first steps. Even in my book I had recommended that these first steps should be taken now, that at least medium of exchange part should be looked at, bilateral payment settlements in bilateral currencies. But it is only the first step. Yes, tomorrow if India becomes the greatest purchaser of Saudi Arabian and GCC oil and other things, it also has a very large navy that can give them, protect the sea lanes over there and other things. And its trade is also increasing with these countries. We will move to a position where bilateral settlement will become more and more lucrative. Because it will become more lucrative, they will agree to denominate certain things in our currency. That will incentivize central banks to hold the rupee, so on and so forth, and the process will reinforce each other. But these processes don't happen overnight or even over decades. I'll give you an example. The United States surpassed the British economy in size 30 years before the dollar could dethrone the pound, the GBP, the pound sterling. So there is a lot of inertia, because network effects continue to favor the one who is already incumbent. It makes sense because it has already made sense. Get the picture? Because X, Y, Z are already trading in this thing, it make sense for A to also trade in it, rather than insist that I'll trade in something and bear the costs of trading in that. That's the bearing the so cost. the That is the key point. I think आपने ये जो so last so में बोला, the that is the key so point. the network effects continue to favor the dollar. See, unlike some other people, I don't give politicized points of views. Okay, I give only what I think is the crux of the matter. There will be no one happier than me when the rupee becomes a globally dominant currency at some Pray point, for it. because that will also Pray mean for that it. the Indian economy is the largest economy in the world, basically controls most of the sea lanes around it, etc., etc., what comes with it. But that is an end state. Okay, that is an end state. There's a lot of things that need to happen before you get there, and it's a very long journey. It doesn't happen overnight. Overnight, absolutely. Uh, Sort of, Saab, I know you're in a rush and you've had to go somewhere, and I've guys, I've dragged him out for an hour, and I said, यार नहीं करना ही करना है आपको ये show मेरे साथ, because we've been talking about it for a while. Thank you so much for taking out the time, and I'm looking forward for another this thing on the printing. If you can also squeeze out another 45 Yeah, minutes to an hour. I think that will be a rather boring session where I'll have to put up slides and stuff like that. Okay, Hmm. I'll have to put up slides and things like that. But if your viewers are willing to bear with that kind of stuff, then we'll do that, right? You should Uh, you should you should read the comments. uh, Trust you me. Right? then these things will By the way, become I am clearer. a slide guy. Uh, I am a slide guy. All my uh, presentations are slides. Here. Okay, let me just say this. Brilliant. We like slides. Please do it. okay, Right? And this is just the so first reaction. it'll go into that territory. But I don't Trust want me, this to become a I professorial do didactic kind of. I do Uh, slides all the time. I use slides all the time. People are saying we'll wait for that show. Thanks everyone. Blockbuster show. So people actually see, people want the clear this thing. And when you can see numbers, right?
people will understand a little more. That's Yeah, one of they the have to reasons why. see. They'll have to see numbers. The first thing, Adi, if you may allow me, if you is that they will have to understand balance sheets of central banks, the government, commercial banks, and enterprises. Because a lot of it depends on that, the asset liability framework. The famous economist Hyman P. Minsky, he was a pioneer in this. He predicted many of the things that we talk about today. And he used to make his explanations based on interlocking balance sheets, how the leveraging and deleveraging of the macro economy happens. Why are the deleveraging and leveraging of balance sheets of micro level players, right? That is how he used to show it. He was extremely brilliant, I would say. But of Trust course, he me, was this not. is the audience. You want to do slide presentations? This is the audience. I've got like 30 more comments to prove it to you. Right? So guys are Yeah, really, really wanting to see that. Uh, Hyman P. Minsky was not given his due in his time, though. But even he said, by the way, that hmm. public debt will have to be validated. So the United States of America can't go on forever just inflating away, or what is called printing money or whatever. There are very many checks and balances on that as well, and I'll explain those. Okay, there are equations that can be derived to explain the major Yeah. check So that comes in. we are waiting for your Yeah, we are waiting for your time. Take out yeah. an hour and a half. We would love to go through that presentation. There are guys who are saying, bring it on. We'll watch it twice or thrice to understand if needed be. See, there is a yearning for knowledge which is there, and I am grateful. I keep saying that God has been very kind to give me such a wonderful audience who actually wants to get into details. So we are all game. You just need to take out the time I, and some I think slides, and I'm sure we'll be sitting here for you. I think Jagannath has been kind that I have been given a patient audience. No, trust you me, guys want to learn. Uh, People want to learn today. People, and me including, because see, I have these doubts in my head, and I've been calling you and we've been talking offline and stuff like that. So देखिए, हम सबको ये doubts हैं because हमारी economy अभी कोई बोलता है बढ़ रही है, कोई बोलता है नहीं बढ़ रही है, कोई बोलता है 5 ट्रिलियन कभी पहुंचेंगे नहीं, आप बोलते हो जी पहुंच जाएगी. अब we need to also decipher. See, propaganda we've been able to decipher in terms of geopolitics, but economics is a little more intricate for us to kind of decipher. So really request but you if you can take out the time and do this. yeah, but Adi, economics is much more standardized also. Even It the is. so-called, even the heterodox schools, provided it Hmm. is economics and not political policy that you are peddling in the name of economics, right? Because I can argue from both sides. This, in fact, I'll do that. What the for and against arguments all, but it has to be within that framework. If you take it away from that framework, you can say anything. You can say, oh, Yeah. we'll de-dollarize tomorrow, or this will happen day after tomorrow, and that will never happen. This is the kind of thing we'll end up saying. But that is not really what you should be saying if you care about understanding the truth. That is not how you should approach any problem, any subject, anything. Everything is subject to assumptions. Every theory is subject to assumptions also, obviously. I mean, that's an obvious statement. So that is Absolutely. the thing. Yeah. Let's do this. So we are waiting for your slides. Let me know, and I'm going to call you, and we'll fix this up. And trust you me, all the audience will be waiting in earnest to learn from you. Thank you so much for taking Right. out the time. Jai Hind. Thank you, Adi. Jai Hind.